Hello friends, आज आम प्रोब्लेम सॉल्विंग एंड सर्चिंग इन एआई विषय पढ़ा। सो फास्ट देखा प्रोब्लेम सॉल्विंग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। प्रोब्लेम सॉल्विंग is the process of finding a way to achieve a special goal। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रे प्रोब्लेम सॉल्विंग एक प्रोसेस होते कहार प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ए वे टू अचीव ए स्पेसिफिक गोल को अचीव करने जो वे दरकार जो उपाय दरकार बा जो बाट दरकार से उपाय को ही फाइंड करने को ही आम कहे प्रोब्लेम सॉल्विंग। इन एआई सिस्टम starts from an initial situation and performs a series of actions to reach the desired goal। तो एआई सिस्टम कौन करे ना इनिशियल सिचुएशन रू स्टार्ट करता है एवं किसी वर्क परफॉर्म करता है बा एक्शन करता है जहाँ फल कि से तार डिजायर गोल रे पहुँची पाता है। तो सर्चिंग helps the AI to find the best path or solution among many possible options। तो प्रोब्लेम सॉल्व करने बहुत ऑप्शन रही डिफरेंट वे रही। तो से डिफरेंट वे रू बेस्ट बा पॉसिबल ऑप्शन को सर्च करिबारे हमको सर्चिंग हेल्प करता है। तो सर्चिंग हेल्प्स द एआई सिस्टम टू फाइंड द बेस्ट पाथ और सॉल्यूशन among many possible options। The next is searching। So in artificial intelligence, searching means finding the information, path or solution needed to solve a problem। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करिया पाई इनफॉरमेशन बा पाथ सॉल्यूशन को फाइंड करबो कि हमें कहूचे सर्चिंग। सर्चिंग मीन्स फाइंडिंग द इनफॉरमेशन, पाथ और सॉल्यूशन नीडेड टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। सर्चिंग अर्थ होची प्रॉब्लम को सॉल्व करिया पाई जो तथ्य आवश्यक बा जो पाथ दरकार और जो सॉल्यूशन दरकार ताकू फाइंड करबा। एग्जांपल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सर्चिंग इन एआई। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सर्चिंग रो एग्जांपल देखिबा। सपोज ए रोबोट इज इन रूम ए रे रोबोट टे अछि एंड वांट्स टू रीच रूम डी एवं से रोबोट टी चाहूची रूम डी को जिया पाई। रूम ए रे से अछि से रूम डी को जिबा को चाहूची। द रोबोट डज नॉट नो द बेस्ट पाथ टू रीच द डेस्टिनेशन। किंतु रोबोट जानी जे डेस्टिनेशन मीन्स रूम डी रे पहुँचा क्यों पाथ रे गले से रूम डी रे पहुँची पारिबो ताहा रोबोट जानी नहीं। सो इट मस्ट look at the available paths and decide which one to follow। तो जो बाटरे गले रोबोट डेस्टिनेशन मीन्स रूम डी रे पहुँची पारिबो से सब अवेलेबल पाथ को फास्ट से देखिबो। फास्ट से अवेलेबल पाथ ऊपर विचार करिबो तापर डिसाइड करिबो जे क्यों पाथ को फॉलो करिबो क्यों पाथ रे जाई से रूम डी रे पहुँचीबो। सो एटी इनिशियल स्टेट होची रूम ए जोटी की रोबोट अच्छी वेयर द रोबोट स्टार्ट्स जोट की रोबोट तार काम स्टार्ट करिवो। गोल स्टेट कौन रूम डी वेयर द रोबोट वांट्स टू गो जो रूम को जो जगह को रोबोट जावाक चाहूची। एक्शन कौन करिवो मूविंग फ्रॉम वन रूम टू अनदर। तो यहाँ हूँ एक्शन गोटे रूम आ गोटे जगह रोबोट एक्शन। सॉल्यूशन द सीक्वेंस ऑफ मूवमेंट्स दैट टेक्स द रोबोट फ्रॉम रूम ए टू रूम डी। For example, the robot may have the following possible path। Suppose robot पाखरे ये सब possible path अच्छी कौन अच्छी ना रूम ए रूम बी रूम डी से रूम ए को जीव रूम बी देकी रूम बी थ्रो रे रूम डी के जीव। आ गोटे possible path अच्छी कौन रूम ए रु रूम सी थ्रो रे रूम डी बा डेस्टिनेशन को जीव। The robot uses a search algorithm to examine the available paths and find the best route to the destination।
तो रोबोट फास्ट कौन कर एग्जामाइन कर रोबोट यूजेस ए सर्च एल्गोरिथम टू एग्जामाइन द अवेलेबल पाथ जो दुईटी अवेलेबल पाथ आम पाखे अच्छे रोबोट पाखे अच्छी फास्ट ताको सी सर्च एल्गोरिथम यूज करके फास्ट ताको सी एग्जामाइन कर विचार कर कौन पे विचार कर टू फाइंड द बेस्ट रूट टू द डेस्टिनेशन से दुईटी मध्य बेस्ट रूट कौन हम जो रूट्रे गले कि डेस्टिनेशन रे पहुँची पार तार कौन सी प्रोब्लेम हम ना से बहुत सहजरे डेस्टिनेशन में पहुँची पार द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एक्शंस टू रीच द गोल इज कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग तो यही प्रोसेस को हमें कहूचे कौन ना प्रॉब्लम सॉल्विंग द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एक्शंस टू रीच द गोल तो क्यों एक्शन कले क्यों वर्क कले आम जा गोल रे पहुँच पार गोल को अचीव ताकू ही आम कहे से प्रोसेस को ही से प्रोसेस को आइडेंटिफाई करने आइडेंटिफाई करने आम कहे प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड द टेक्निक यूज टू एक्सप्लोर एंड इवैल्यूएट डिफरेंट पार्ट्स इज कॉल्ड सर्चिंग द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग ए प्रॉब्लम कंसिस्ट ऑफ 5 स्टेप्स तो गोटे प्रोब्लेम को सॉल्व करें आमको 5टा स्टेप दे जाक पड़ो तो 5टा स्टेप गुड़े कौन कौन सब ना दिस 5 स्टेप्स आर डिफाइन द प्रॉब्लम फर्स्ट स्टेप इज डिफाइन द प्रॉब्लम एंड सेकंड इज एनालाइजिंग द प्रॉब्लम थर्ड इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन फोर्थ इज चूजिंग द सॉल्यूशन एंड फिफ्थ इज इम्प्लीमेंटेशन तो फर्स्ट स्टेप डिफाइन द प्रॉब्लम को डिफाइन कर The first step is to clearly understand and define the problem. So हमको फर्स्ट स्टेप रे क्लीयरली बुझा पड़ो जे हम प्रॉब्लम कौन ताकू डिफाइन करा पड़ो ताकू अंडरस्टैंड करा पड़ो आमको कौन अचीव करार अच्छी एवं से गोलटा को आम किपरि अचीव करवा क्यों वे रे गले आम से गोलटा को अचीव करि पारिबा द एआई सिस्टम मस्ट नो व्हाट नीड्स टू बी अचीव्ड एंड व्हाट द गोल तो एआई सिस्टम मस्ट नो जानिया दरकार जे कौन व्हाट नीड्स टू बी अचीव मीन्स व्हाट रिजल्ट वी वांट टू गेट आमे क्यों रिजल्ट चाहूचे आमे रिजल्ट रे कौन चाहूचे एआई टू आमे कौन एक्सेप्ट करूचे तो से जिनसटा एआई जानिया दरकार एंड व्हाट द गोल इज एवं आमर लक्ष्य कौन ए रोबोट एग्जाम्पल देखा ए रोबोट इज इन रूम ए से रोबोट विषय में कहूचे जो रोबोट की रूम ए आगुरी थिला एंड नीड्स टू रीच रूम डी एवं से रोबोट चाहूँ रूम डी रे पहुँचापी द प्रोब्लेम इज टू फाइंड ए पाथ फ्रॉम रूम ए टू रूम डी सब पूर्व आम जो एग्जाम्पल से एग्जाम्पल ही देखुचे ए तो रोबोट टी फास्ट कौन रूम ए रे अच्छी एवं सी चाहूँ रूम डी रे पहुँच तो ये प्रोब्लेम कौन The problem is to find a path from room A to room D. तो रूम ए रु सी रूम बी केमिति जीव किपरि जीव तो पाथ को फाइंड करिया जो प्रॉब्लम तो सेकंड स्टेप इज एनालाइजिंग द प्रॉब्लम इन दिस स्टेप द एआई सिस्टम गैदर्स इनफॉरमेशन अबाउट द प्रॉब्लम तो यही स्टेप रे कोन बे ना प्रॉब्लम विषय सब इनफॉरमेशन अच्छी ताको एआई सिस्टम एकाठी करे बा गैदर करे It studies the situation to understand what options are available and what difficulties may exist. तो प्रॉब्लम को सॉल्व करिया पई क्यों कौन सब ऑप्शन अच्छी बा कौन कौन सब सॉल्यूशन अच्छी एवं सेही ऑप्शन रे बा सेही वे रे डिफिकल्टीज कौन कौन थाई पारे फॉर एग्जांपल इफ ए रोबोट वांट्स टू मूव फ्रॉम रूम ए टू रूम डी जब से रूम ए रु रूम डी को गला इट चेक्स ऑल द पॉसिबल पार्ट्स तो सबू जगह पॉसिबल पाथ को चेक करिवो जे केउ केउ पाथ रे गले से रूम डी रे पहुंची पारिबो एंड फाइंड्स आउट इफ देयर आर एनी ऑब्स्टैकल्स ऑन द वे एवं सी ता ऊपर मध्य खोजिबा बा विचार करिवो जे जो पाथ को से चूज करूची से पाथ रे कोन से ऑब्स्टैकल नहीं तो याकू मध्य से कंसीडर करिवो Then third step is identification of a solution. In this step, all possible solutions to the problem are identified.
सो प्रोब्लेम जिते सब पॉसिबल सॉल्यूशन अच्छी ताकू फास्ट आइडेंटिफाई करता है कि एआई द एआई सिस्टम जनरेट्स डिफरेंट वेज टू अचीव द गोल तो डिफरेंट वे को एआई सिस्टम जनरेट करता है गोल को अचीव करने द रोबोट फाइंड्स टू सो ये देखिए आम मैं सपोज द रोबोट फाइंड्स टू पॉसिबल पाथ दुईट पॉसिबल पाथ रोबोट फाइंड कर रूम डी को जावाई कौन कौन रूम बी थ्रो जापर ना रूम सी थ्रो जापर दुईट पाथ को सी फाइंड कर बोथ पाथ्स आर पॉसिबल सॉल्यूशन तो ये दुईट पाथ हूँ पॉसिबल सॉल्यूशन देन फोर्थ स्टेप इज चूजिंग द बेस्ट सॉल्यूशन ये दुईट जो पाथ को से फाइंड कर तब ये दुईट पाथ 1 पार्ट 2 भर बेस्ट सॉल्यूशन कौन बेस्ट पाथ कौन आफ्टर आइडेंटिफाइंग द पॉसिबल सॉल्यूशन दुईट पॉसिबल सॉल्यूशन से फास्ट आइडेंटिफाई कला द एआई सिस्टम कंपेयर्स देम एंड सिलेक्ट द मोस्ट suitable one based on factors such as time, cost or distance. If the path through room B is shorter than the path through room C, the robot chooses room A, then room B, room D. Jadi if the path through room B is shorter than the path through room C, जदि रूम बी रे थ्रो रे गले सी शीघ्र बा कम दूरता होची शीघ्र रूम डी रे पहुँच जीव रूम सी अपेक्षा तेबे से रूम बी ही चूज करिवो रूम बी थ्रो रे ही जीव बिकॉज इट टेक्स लेस टाइम यदि तार डिस्टेंसटा कम अच्छी बहुत शॉर्ट अच्छी रूम सी अपेक्षा ताले रूम बी दे सी जीव कहीं इट टेक्स लेस टाइम कारण ये कम समय नब देन लास्ट स्टेप or fifth step is that implementation. In this step the selected solution is used to solve the problem. तो जो solution को से select करछि that is room A, room B, room D तो से solution को से use करिवो ता problem that is to reach the room D रे पहुँचबा को से solution को use करिवो तो the robot follows the chosen path and reaches its destination. तो जो पाथ को से चूज कर रोबोट से पाथ को फॉलो करिवो एवं ता डेस्टिनेशन दैट मीन्स द रूम डी रे पहुँचा डेस्टिनेशन अच्छी तादरे से पहुँचो. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू.